हेलो स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ अपना करंट इलैक्ट्रिसिटी का सैकेंड लैक्चर लगाने जा रहे हैं और लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ एट द एंड मैं एक वर्ड यूज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटे ਅਸੀਂ लास्ट क्लास क्या सीखा कि करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटे एट नॉर्मल टेम्परेचर the electrons will also keep on moving randomly. If the temperature is 0 Kelvin, if temperature is 0 Kelvin, then there will be no motion of charges, no motion of electrons. At 0 Kelvin, the motion of the charges will freeze. But at room temperature means near about 300 or 300 510 Kelvin I'm saying now. So we know that the charges will acquire some velocity. So at some room temperature the charges will be in random motion. So free charges will be in random motion. सो की इस टेम्परेचर करके जो चार्जेस ने मोशन एक्वायर किया कि इस मोशन करके करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आंसर है नो, बेटे देयर आर ऑलमोस्ट और 10 raised to power 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in unit volume of conductor। इन्ने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने किसी भी कंडक्टर दे विच और एट रूम टेम्परेचर दे ऑल विल बी इन सम रैंडम मोशन दा मतलब कि जे मान लो कि इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो इस इन्ने सारे इलेक्ट्रॉन ने, लेट अस से दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग वन और टू इलेक्ट्रॉन्स। So at this point I am saying that random motion, so electrons let us say that are crossing in this direction. At this point they keep on colliding with each other. तो ऐस जगह जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर हो गया सीगा, इट विल कोलाइड विद सम अनदर इलेक्ट्रॉन। उदा करके क्या होएगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐस जगह पे क्या किसी और इलेक्ट्रॉन के नाल स्ट्राइक कर गया। तो लेट अस से जाके दूसरा जो अगला इलेक्ट्रॉन सी इधरों इधर आ रहा सीगा, तो इस स्ट्राइक करके अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस जिसने इधर मूव करना शुरू करता। सो इन अ कंडक्टर ड्यू टू दिस टेम्परेचर चार्जेस विल बी इन रैंडम मोशन, मींस दे विल बी मूविंग हियर एंड देयर एंड इन ड्यूरिंग दिस मोशन वो की करनगे, एक दूसरे दे नाल कोलाइड करदे रहणगे। इत्थे मैं एक होर वर्ड यूज करना चाहुंदा है, किन्ने के टाइम वास्ते जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, मींस इन्हें कोलाइड तो कर ही जाना है। द टाइम बिटवीन दीज टू collisions, the time between these collisions, so आ इलेक्ट्रॉन इथों चलिया अगले इलेक्ट्रॉन के नाल ऐसे कर जाके स्ट्राइक किया। दिस टाइम बिटवीन, सो इन्हें नोट कर लियो माड़ा जिहा, सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision is called relaxation time, means during this time only the electron is free to move, so इन्ने टाइम वास्ते वो मूव करेगा। और बेटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर। सो बेटे इन सारियां दा जेड़ा एवरेज, सो लेट अस से दैट देयर आर n free electrons per unit volume of a conductor, so then I will be using a word average relaxation time, इसका सिंबल है जी टाउ।
So this will be equal to, let us say that the first electron is moving with for time tau1, second is moving for time tau2, and so on, and nth is moving with time tau n. So if I divide this with n, so I will get average relaxation time. So I have introduced this word average relaxation time here because I will be using it later in the derivation part. So इसमें तुसी हाल दी घड़ी याद कर लेना, नोट कर लियो प्लीज। अगली गल, तो बेटे हुन क्वेश्चन अराइज होता है कि इस फ्री चार्जेस दे रैंडम मोशन करके कोई करंट है, तो आंसर है नो। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्जेस रैंडम मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। मान लो कि मैं इस जगह उत्ते देख रहा हाँ, तो इधरों 10 चार्जेस या 100 चार्जेस इधर इधर चले गए। इन दिस केस ऑफ रैंडम मोशन व्हाट इज हैपनिंग इज कि जे 50 चार्जेस इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਚਾर्जेस इधर ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਚਾਰਜ इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਚਾर्जेस इधर ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। So due to temperature that is called as a thermal velocity. So एक अगला वर्ड है thermal velocity of electrons, thermal velocity of charges or electrons. But let us say that this is the initial velocity, this is the initial velocity u, मैं इनू thermal लिख रहा हूँ। So the thermal velocity of charges is the motion or the velocity acquired by charges due to temperature, due to temperature. So बेटे इस वेलोसिटी करके करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज का मतलब फिर तो क्या है, मान लो कि मेरे को n इलेक्ट्रॉन्स ने, मैं कह रहा हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन के कोल जी इनिशियल वेलोसिटी वो u1 है, दूसरे के कोल u2 है एंड सो ऑन, और nth चार्ज के कोल वेलोसिटी कितनी है un। जे मैं इनू ਆਪਾਂ n ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दिए सो वी विल गेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और क्योंकि ये मोशन रैंडम है सो ड्यू टू दिस थिंग मींस 10 इधर ਨੂੰ 10 इधर ਨੂੰ 100 इधर ਨੂੰ 100 इधर ਨੂੰ, सो नेट थर्मल वेलोसिटी और एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। सो मैं कह रहा हूँ u थर्मल, so this will be the initial velocity of the electrons or of the charges due to temperature, और इसकी जी एवरेज वेलोसिटी है दिस विल बी टेकन एज 0 due to the random motion, so these all are the terms that I will be using while deriving the relation between applied electric field and drift velocity. So I hope that ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। So next thing is drift velocity. तो बेटे थर्मल वेलोसिटी सीगी द वेलोसिटी ड्यू टू द टेंपरेचर, ਆਪਾਂ क्या कि इस थर्मल वेलोसिटी करके करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। सो नो करंट ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। सो कहता है फिर जे मैं करंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहना है कंडक्टर के फिर की करा। तो बेटे फॉर दिस लेट अस से दैट आई हैव अ कंडक्टर having area of cross section A, तो आ एक कंडक्टर है जिसका एरिया A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस कंडक्टर की जी लेंथ है फॉर द टाइम बिंग मैं कह रहा कि लेंथ कितनी है, ये चार्जेस ने रैंडम मोशन ने, और उस रैंडम मोशन करके करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होया। मैं करंट कॉन्स्टिट्यूट कराना चाहना तो की करा। तो बेटे करंट कॉन्स्टिट्यूट कराने वास्ते आई विल हैव टू अप्लाई सम potential difference across the two ends of the conductor. Let us say that the two ends of the conductor is P and Q.
What we will do? We will apply some potential difference across the terminals. So let us say that this applied potential difference is V. Consider a conductor having area of cross section capital A and length capital L. ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ if a potential V is applied across its two terminals or two ends P and Q. So बेटे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ potential difference V apply करता तो ਕੀ होएगा? बेटे in this conductor ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि करंट constitute होना है from positive to negative terminal. तो क्यों होया? क्योंकि इस दे दो ends ਦੇ across electric field will be settled. Electric field create हो जाएगा in this direction. Electric field is created in this direction, plus or minus. Electric field create हो गया. So if a potential V is applied across the two ends of the terminals P and Q, an electric field from P to electric field create हो गया from P to Q. इस इलेक्ट्रिक फील्ड करके की होएगा? लेट अस से दैट ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं शो कर रहा हूँ एक ही इलेक्ट्रॉन, बट इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने. आप पहले बोले सी देयर आर 10 raised to power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, बट विल हैपन नाउ. So they will start drifting opposite to this. They will start drifting. So all will drift in this direction. All will drift in this direction with velocity. Let us say that the average drift velocity is Vd. So electric field will be set up from P to Q, due to which the electrons, or we will say free electrons, are drifted. So the electrons are drifted from end Q to P as shown in figure. तो बेटे इसका एक नोट बना लियो. आई होप दैट तुसी इसको नोट कर लिया. So drift velocity Vd create होगी. So now we have to define what is drift velocity. I hope that तुसी इसको नोट कर लिया. So now definition of drift velocity. बट इसका सिंबल मैं यूज करूंगा Vd. सिंबल इधर आप यूज करेंगे Vd. So it is defined as the average. So it is defined as the average velocity with which the free electrons gets drifted towards the positive end.
towards the positive end of the conductor। तो अपने को इसे कंडक्टर P है towards the positive end of the conductor, यानी कि from Q to P under। The influence of electric field under the influence of electric field। तो आज की डेफिनेशन है, प्लीज नोट कर लियो। आई होप दैट तुम नोट कर लिया। सो आ गई अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़े इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। तो V ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, E ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ। तो द पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपना अप्लाई किया सीगा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड करके होया कि मैं लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन will experience a force F is equal to Q multiply E होता है। और लेट अस से अगर चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज E, सो माइनस E, तो माइनस E मल्टीप्लाई कैपिटल इन्ना फोर्स लगेगा। मैं इस तो बाद गल करांगे तो केवल और केवल इस मैग्नीट्यूड दी, सो मॉड F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई E, सो माइनस नेगेटिव स्टैंड फॉर द velocity is in the opposite direction or force is in the opposite direction to the direction of applied electric field, mod F will be is equal to इन्ना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन उत्ते लग गया। इफ mass of each electron is equal to m, the mass of each electron is m, then each free electron will acquire an acceleration A, that is equal to force over mass, that is equal to E over m. I'm talking only about the magnitude. So this will be acceleration acquired by each electron। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, इसे प्लीज इसको नोट कर लो। Using equation of kinematics, we know that V is equal to U plus AT, U plus AT। So today in this now, this V is the final velocity that is due to the average thermal velocity। So let us say that this is the drift velocity, I am representing it by VD। This is U thermal initial the free electrons they call thermal velocity सीगी। So U is the initial velocity due to the temperature, so U thermal इन्होंने लिखता plus acceleration।
So this acceleration is due to the applied electric field. Is due to applied electric field. Multiply t. So this t I am taking as tau. So tau the meaning मैं already हम दस्ता सीखा. This is called as average relaxation time during which the electrons will be free to move or the time between two successive collisions. So this is tau. So tau stands for average relaxation time. मैं पहला ही दस्ता सीखा. Average relaxation. तो आओ चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ यूज ਕਰਾਂਗਾ equation of kinematics. So Vd is the drift velocity. U ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ average thermal velocity is 0. Average thermal velocity is 0 plus acceleration. Acceleration ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ E capital E over m multiply tau. So using all these things we got Vd is equal to E over m multiply tau. So any drift velocity it charge acquire कर लेगा. From all these things, charge of electron is constant, mass of electron is constant, tau is also taken as constants. We will say that drift velocity is directly proportional to the applied electric field. So with all these things, we conclude for today. In our next class, we will talk about the relation between the drift velocity and the current constituted in this conductors. So I hope that इसी से नोट कर लिया है तो हमें समझ आ गया है. Thank you. Have a nice day.